अभी एलोपैथी इज़ द वर्ड टर्म कॉइन्ड बाय डॉक्टर हैनेमैन. ठीक है. एलोपैथी इज मोड ऑफ ट्रीटमेंट with mixtures of unknown medicinal substance arbitrarily set up. Because the symptoms of the medicines are the symptoms of this medicines symptoms of this medicines is neither similar nor opposite. Symptom of these medicines are neither similar nor opposite. Allopathy is a mode of treatment of mixture of unknown medicinal substance arbitrarily set up. ठीक है. In this system of treatment there is no relation between the disease system and the medicine symptom. In this system of medicine the symptoms neither based on similar. This system is based on imagination and imagination of the material cause of the disease. If the person is suffering from headache along with the constipation, in case physician will prescribe a sedative and purgative to treat the headache, because they think that constipation is a causative factor in the mentioned case, but it is entirely wrong, because the causative factor of headache may be something else besides constipation. मटीरिया पैकेंस की वजह से लार्ज डोजेस. Take in this medicine large quantity because it considers material body or object of the disease treatment. Therefore, the medicine is used in physiological doses. Considers physiological doses. Allopathy believes specific treatment in the system of treatment. ठीक है. Considering few main symptoms and some common symptoms. अभी laws of similar is based on laws of similar is a medicine of evidence. It use similar medicines which has power. It use medicine which has the power to produce similar action on similar symptoms as a natural disease to be treated. The large doses, small doses includes many drugs, polypharmacy, monopharmacy. Mono minimum, the large.
Medicine are given having no direct dangerous violent medicine action are known. Pathy is the of cure method of cure. Homeo means similar, pathos means suffering, allo means heterogeneous suffering. It is based on the laws of similar laws of ये मिनिमम ये लार्ज डोजेस क्रूड फॉर्म में रहता है, ये डायनामिक फॉर्म में रहता है. फॉर डायनामिक एक्शन टू फॉर्म द डायनामिक एक्शन अपना ये मोनोफार्मेसी है, पॉलीफार्मेसी मैनी ड्रग सब्सटेंस एंड मिक्सचर आर यूज, सिंगल सिंपल रेमेडी इज यूज. ठीक है. डायनामिक अल्टरेशन डायनामिक हेल्थ मेडिसिन आर ऑल्सो डायनामिक हेल्थ. इट बिलीव दैट डिजीज इज डायनामिक और इट बिलीव दैट देर इज मटीरियल कॉज ऑफ द डिजीज. वेल प्रूफ रेमेडीज भी ले सकते हैं. वेल प्रूफ dangerous drugs having no relation with the medicine and the disease symptoms are employed. ठीक है. होलिस्टिक अप्रोच, इधर होलिस्टिक अप्रोच नहीं है. डज नॉट रिकॉग्नाइज वाइटल फोर्स, इंडिविजुअलाइजेशन होता है. ठीक है. इट्स मेनली पैलिएटिव मेथड. ठीक है. और अपना मोनोफार्मेसी क्योर, ये सप्रेसिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट और पैलिएटिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट. ठीक है. डायनामिक वाइटलिस्ट कॉज ऑफ डिजीज, डायनामिक कॉज ऑफ डिजीज. और इधर क्या है, मटीरियलिस्टिक कॉज ऑफ डिजीज. ठीक है. इन रिगार्ड्स टू द डिजीज बाय सम टोटल ऑफ द फंक्शन एंड द स्ट्रक्चरल चेंजेस. ठीक है. दैट इज एनामनेसिस द हिस्ट्री ऑफ द डिजीज. It regards disease as sum total of the whole. It regards disease as a perceptible signs and symptom. Subjective mental symptoms are mental symptoms are not at all important. ऐसा. Homeopathic is the method of cure by administration of drug. administration किसका, दवाई का.
produce ठीक है। ये हो गया होम्योपैथी। ये अभी एंटीपैथी। एंटीपैथी का mode of treatment based on contraria contraris curenter, where the medicine are based or where the treatment is based on single symptom among the many other symptoms, and that is produce except opposite stage contraria contraris curenter. It was coined by Galen, it was coined by Hahnemann. Until the system of treatment, if a person is suffering from constipation, the person will be given medicine which causes diarrhea. It is based on the simple of opposites, ठीक है। और वो अपोजिट पे बेस नहीं था। इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एंटीबायोटिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट सिंगल सिम्टम को देकर रिलीफ मिल जाता है। टोटलिटी सो रिलीफ फ्रॉम द टोटलिटी ऑफ डिजीज कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एंटीबायोटिक इन chronic disease. There is increased aggravation of the symptom. Under the system of treatment, primary action of the medicine is suppressed. As soon as the primary action of the medicine is over, the disease return to a greater velocity. If a hand is kept under the cold water, it will found that the wet hand will be cooler than the other hand. But later on, the wet hand will become more hot than any other. This condition is secondary action. This mode of treatment has very limited scope. It is advised only in accident, injuries, and shock. In which vital force is secondarily affected and first the organism. This method is only employed in antipathic mode of treatment, unconsciousness, suffocation. Taken in such medicine which can produce heat or any other diminished suffocation. जैसे कि बर्न हैंड है, पुट इन द कोल्ड वाटर, तो कोल्ड वाटर में इंस्टेंटेनियस रिमूव द बर्निंग, ठीक है। While the patient complained of chilliness, deficiency of vitamin, put in warm water which warmed him immediately. रिमूव द बर्निंग पेन, फिर आफ्टरवर्ड भी बर्निंग पेन होगा, ऐसे करके कुछ है, ठीक है। फिर इन डिजीज ऑफ द लॉन्ग ड्यूरेशन व्हेन द पेशेंट रिट्रेंड ही वाज डिप्राइव्ड ऑफ फूड। बाद में जब से फुटनोट नंबर 66 में रेशियो मेथड डिटेल 59 सारे एग्जांपल
एग्जाम्पल्स वगैरह सबसे पहले अगर जो सो नहीं पा रहा उसको ओपियम देंगे तब और फिर पैरालिसिस हो जाएगा। फिर लास्ट डोजेज ऑफ विड्रॉल्स laxative laxate the bowel to evacuation, but in it was sought to remove the chronic tendency of constipation, but the secondary action मतलब बहुत confinement हो जाएगा, ठीक है। The ordinary physician seeks to remove chronic debility by administration of wine, which however stimulates only its primary action, and hence the forces sink all the lower मतलब सारे जो फोर्सेस रहेंगे सिंक हो जाएंगे इन सेकेंडरी एक्शन बाय बिटर सब्सटेंस एंड हीटिंग कॉन्डिमेंट्स ही ट्राइज टू स्ट्रेंथन द वार्म द वीक एंड स्ट्रेंथन बिटर सब्सटेंस हीट कॉन्डिमेंट से वो क्रॉनिकली वीक और कोल्ड स्टमक को ठीक करने की करेगा। बट इन सेकेंडरी एक्शन this action of this palliatives which was stimulating in primary action only the stomach became yet more inactive. लॉन्ग स्टैंडिंग डेफिशिएंसी ऑफ वाइटल हील एंड चिली। जो लोग को बहुत वाइट चिली पेशेंट है, वाइट हैंड में हीटिंग 59 सारे एग्जाम्पल्स वगैरह है। सबसे पहले अगर जो सो नहीं पा रहा उसको ओपियम देंगे तब परसिस्टेंट डायरिया के लिए उसका प्राइमरी रिएक्शन कॉन्स्टिपेट द बाउल, सेकेंड रिएक्शन मतलब स्टॉपेज ऑफ डायरिया स्टार्ट कॉन्स्टिपेट करेगा, सेकेंड रिएक्शन वापस से डायरिया हो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, बिकम ऑल वर्ड्स, ठीक है। और फिर वायलेंट एंड फ्रीक्वेंट रिकरिंग पेन्स ऑफ ऑल काइंड ओपियम को सप्रेस करेगा शॉर्ट टाइम, फिर बाद में उसकी इनटॉलेबल सीवियरिटी फॉर नॉक्टर्नल कफ ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग द ऑर्डिनरी फिजिशियन न्यू दैट एडमिनिस्टर ओपियम इज प्राइमरी एक्शन, मतलब नॉक्टर्नल कफ होता है तो सप्रेस इरिटेशन में ओपियम देंगे, द कफ वुड देन परहैप्स सीज द फर्स्ट नाइट एंड सब्सिक्वेंटली बाद में सीवियर हो जाएगा, ठीक है। इफ वर गिवन अगेन बाय द पैलिएटिव इंक्रीज अगर वापस से पैलिएटिव मेथड देंगे तो फीवर और नॉक्टर्नल पर्स्पिरेशन ऐड हो जाएगा नॉक्टर्नल कफ के साथ, ठीक है। वीकनेस ऑफ द ब्लैडर विद कॉन्सिक्वेंट रिटेंशन ऑफ द यूरिन, मतलब ब्लैडर वीक हो गया है, यूरिन निकल नहीं रही तो उसको देंगे कैंथेराइज। कैंथेरिस क्या करेगा, इवैक्यूएशन ऑफ द यूरिन करेगा, फिर बाद में देयर आफ्टर द ब्लैडर बिकम्स लेस केपेबल ऑफ स्टिमुलेशन एंड लेस एबल टू कॉन्ट्रैक्ट, तो पैरालिसिस ऑफ द ब्लैडर हो जाएगा और फिर पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट डोजेज ऑफ विड्रॉल्स laxate the bowel to evacuation, but in जो लोग को बहुत वाइट चिली पेशेंट है, वाइट हैंड में हीटिंग की कमजोरी है तो उनको कोल्ड बात वार्म बात प्रिस्क्राइब किए थे, उसकी वजह से लोग बहुत वीक पड़ गए थे एंड चिली टू द पेशेंट सब्सिक्वेंटली बिकम बहुत कोल्ड पड़ गए तो वेरी चिली हो गए थे, ठीक है। सीवियरली बर्न फ्री इंस्टेंटेनियस एलिवेशन एप्लीकेशन ऑफ द कोल्ड वाटर बट द बर्निंग कैन आफ्टरवर्ड्स इंक्रीज टू एन इनक्रेडिबल डिग्री एंड इन्फ्लेमेशन स्प्रेड एंड राइजेस टू ग्रेटर हाइट। अभी डाई द हेल्प ऑफ चिकनीज टर्नोटेटरी रेमेडीज दैट प्रोवोक सेक्रेशन द म्यूकस कोराइजा विद द स्टॉपेज ऑफ द नॉन स्टैंडिंग, उसकी वजह से इट वॉज ऑब्जर्व दैट द डिजीज इज एग्रेवेटेड ऑल मोर बाय द एंटागोनिस्ट रेमेडी इन द सेकेंडरी एक्शन इन द नोज बिकम्स टू मोर स्टॉप बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड गैल्वेनिज्म से। प्राइमरी एक्शन क्या रहता है, मस्कुलर एक्शन स्टिमुलेट होता है। अब सेकेंडरी एक्शन में क्या होता है, तो बहुत ही डेडनिंग जैसा हो जाता है, मस्कुलर इरिटेबिलिटी एंड कंप्लीट पैरालिसिस। वेनेस एक्शन से टू रिमूव क्रॉनिक डिकंटामिनेशन ऑफ द ब्लड टू द हेड, बट इट वॉज फॉलोड बाय ग्रेटर कंजेशन, मतलब अगर डिकंटामिनेशन तो हुआ और ग्रेटर कंजेशन की वजह से ऑर्डिनरी मेडिकल वैक्सीन जिसकी पल्स स्लो रहती थी उसको डिजिटलिस देते थे ताकि पल्स फास्ट हो जाता, पल्स इतनी फास्ट हो जाती ये तो कि किडनी में भी नहीं आती थी, ठीक है। 60 एफोरिज्म में ब्रूसियो मेथड। अभी प्राइमरी एक्शन क्या होता है, प्राइमरी एक्शन ऑफ एनी ड्रग वाइटल ऑन वाइटल फोर्स, वाइटल फोर्स इज अ पैसिव रिसीवर इन इट, ठीक है। और सेकेंडरी एक्शन क्या, रिएक्शन ऑफ वाइटल फोर्स ऑफ ऑन द प्राइमरी एक्शन, ठीक है। वाइटल फोर्स एक्शन एक्शन इज एक्टिव, ठीक है। इसमें और क्या बोलने का था,
Second reaction is the reaction of the vital force against the primary action. It follows Newton action and reaction is equal and opposite. And secondary counteraction. This is an action just opposite in equal to the primary action. This is an action equal and opposite to the primary action. Such after action takes place in antipathic system. Action equal and opposite to the primary action. Okay? Such type of action takes place in the antipathic system. In antipathic, the medicine is given in large doses so that the primary action of the medicine depresses the vital force due to the primary action. Patient get good temporary relief, but when the secondary action in antipathic mode of treatment, primary action overpowers the disease vital force. डिप्रेसेस द वाइटल एक्शन. फिर अपना सेकेंडरी एक्शन में क्या है, कोई टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा. सेकेंडरी एक्शन इज इनएविटेबल, द कंडीशन बिकम वर्स. फॉर एग्जाम्पल अ पॉजिटिव मेडिसिन विल कॉज लूज टूलिज टेम्परेरी रिलीफ कॉन्स्टिपेशन, बट व्हेन द वाइटल फोर्स रिएक्ट्स अगेंस्ट द प्राइमरी एक्शन ऑफ द मेडिसिन द पेशेंट बिकम्स मोर कॉन्स्टिपेटेड. ठीक है, इसके एग्जाम्पल है. It is a sort of action that takes place under homeopathic system. In homeopathic treatment, there is a similar relation between drugs, so the nature does not produce any opposite reaction. In homeopathic treatment, there is similar relation between the drug, and so the nature does not produce any opposite reaction. In nature, in homeopathic method of treatment, there is a similar relation between drugs and disease, so the nature does not produce phenomenon vital force free from artificial disease.